Hello and welcome students in my video lecture series on the subject of botany. We are discussing the botany of class 11th and we are in the unit of plant anatomy. So far we have discussed what is plant anatomy, what are the various tissue systems in tissues in plants, and we have studied the simple permanent meristematic tissue. We have discussed the simple permanent tissue, and within simple permanent tissue we have discussed the parenchyma, the collenchyma and the sclerenchyma. In today's video lecture, we will focus on complex permanent tissue. First, we should know that what is a complex permanent tissue. If a tissue is made up of more than one type of cells, any tissue which is made up of more than one type of cells, it's called as complex permanent tissue. Or any tissue which is made up of one type of cells, it's called as simple permanent tissue. मैंने आपको बताया था सिंपल परमानेंट टिश्यू हमारे पास दो तरह के हैं. परमानेंट टिश्यूज हमारे पास दो तरह के हैं. एक हमारे पास है सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक हमारे पास है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू एक तरह के ही सेल्स का बना होता है. इसके बरक्स जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है वो एक से ज्यादा टाइप्स के सेल्स का बना होता है. हमारे पास जो बेसिकली कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जिसके अंदर जो बना होता है एक से ज्यादा तरह के सेल्स का, ये हमारे पास दो तरह के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. एक हमारे पास जाइलम है, एक हमारे पास फ्लोएम है. मैंने आपको लास्ट टाइम भी फ्लो चार्ट में दिखाया कि जाइलम के अंदर चार डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं. एक वेसल्स होते हैं, एक ट्रैकिड्स होते हैं, एक जाइलम पेरेन्काइमा होता है, एक जाइलम फाइबर्स होते हैं. इसी तरह फ्लोएम के भी अंदर भी 4 डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं. एक सीयू ट्यूब्स होते हैं, दूसरा कंपेनियन सेल्स होते हैं, तीसरा फ्लोएम पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, फिर उसके बाद फ्लोएम फाइबर्स होते हैं. तो दोनों जो है ये जाइलम और फ्लोएम जो है दे आर आवर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा दे आर आवर सिंपल परमानेंट टिश्यू. सो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो हमारे पास है वो जाइलम और फ्लोएम है. अब पहले हम बात करेंगे जाइलम की. जाइलम जो है इट इज ए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. It is a complex permanent tissue. You all know this. It is a complex permanent tissue and it is made up of more than one type of cells, and the main function of this xylem is that it carries out conduction of water and minerals from roots up to the all aerial parts, that is the shoot. तो जाइलम जो है ये एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है. इसका काम है ये वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है. जैसे ही रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल, they absorb minerals also from the soil, and then this water is raised, it's being sent to all body parts of the plants through this xylem. So xylem जो है ये एक पाइप का काम करता है. उस पाइप के थ्रू वाटर और जो मिनरल्स है वो एरियल पार्ट्स तक पहुंचते हैं इस जाइलम के थ्रू. तो जाइलम का जो मेन काम है, इट हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ water and minerals from roots up to the all aerial parts of the plant body. And remember, this xylem is made up of 4 different types of cells. We will discuss them one by one. One is we are called as vessels. What are these vessels? If you see the structure of a vessel, its structure is like this. It is a cylindrical tube-like structure. It is a cylindrical tube-like structure. शाबाश. वेसल्स जो है these are cylindrical tube-like structures formed by end-to-end joining of vessel elements और वेसल मेंबर्स। मैं आपको कह रहा हूं मेंबर्स। ये वेसल जो है
ये लंबे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. दीज आर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स. ये देखिए, दिस इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैविंग a thick, what is called as wall, lignified wall, and remember they are having a lot of lumen. जो lumen इनकी है वो काफी ज्यादा होती है. और ये जो वेसल्स होते हैं ये डेड सेल्स होते हैं. इनके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है. याद रखना, ये वेसल्स जो है ये डेड सेल्स होते हैं, इनका थिक वॉल होता है, लिग्निफाइड वॉल होता है. और याद रखना है कि इनके अंदर एक काफी ज्यादा ल्यूमिन होती है. आप देख रहे हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें एक एलिमेंट है, ये मार्कर एक एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है, ये दूसरा, ये तीसरा रिप्रेजेंट करता है. और हर कोई एलिमेंट जो है वेसल का, हर कोई एलिमेंट जो है उसको बोलते हैं हम वेसल एलिमेंट या वेसल मेंबर हम उसको बोलते हैं. सो वेसल, वेसल्स आर बेसिकली लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ज्वाइनिंग. हमने एंड टू एंड ज्वाइन किए ये वेसल एलिमेंट्स. वेसल एलिमेंट्स व्हेन एंड टू एंड ज्वाइंड together they form vessels, they form long tube like structures, and these tube like structures they are having a broad lumen. And remember, the end wall of each vessel element, this is a vessel element, this is a vessel element. What will happen here, again another vessel element will be kept on this. इसके ऊपर एक और vessel element आएगा, यहां से भी नीचे एक और vessel element आएगा. शाबाश. And remember, the vessel elements, the end walls of the vessel elements are having perforations. The end walls of vessel elements are having perforations. So remember, vessels, they are long tube like structures. They are formed by end to end joining of members called as vessel elements or vessel members. Each vessel, the end walls of each vessel element are perforated or are having small pores. Through these pores, the one vessel element remains remains in connection with another vessel element, and so on and so forth. So these presence of these perforations is very necessary. If these perforations are not there, what will happen? The connectivity between the cells, these vessel elements that are joined end to end, will not be there. So these perforation palates, each vessel element has a perforation palate. And remember, the presence of vessels is characteristic feature of angiosperms. The presence of vessels is characteristic feature of angiosperms. And remember, gymnosperms जो है, gymnosperms do not have vessels. Remember, हमारे पास जो जिम्नोस्पर्म्स है उनके अंदर वेसल्स नहीं है. जहां तक हमारे पास एंजियोस्पर्म्स का ताल्लुक है, दे आर द फर्स्ट प्लांट्स वेयर वेसल्स आर प्रेजेंट. एंड रिमेंबर, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दैट the presence of vessels is characteristic feature of angiosperms. No doubt we are having certain angiosperm families where vessels are absent. For example, we are having some families like Winteraceae, we are having some families like Trochodendraceae, we are having some families like Trapeaceae. These are the three families. One is Winteraceae, another is Trochodendraceae, another is Trapeaceae. These are the three families where you do not find the vessels, though they are angiosperms, but they are having vessel-less wood. They do not have vessels, but majority of angiosperms have vessels. That is why the presence of vessels is characteristic feature of angiosperms. However, the gymnosperms, they do not have the what is called as vessels in their wood, except one class that is called as Nettales. We will not go into that, although I have discussed all those things in what is called as the plant diversity. So आप याद रखेंगे, वेसल्स का होना एंजियोस्पर्म्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वेसल्स नहीं पाए जाते हैं. वेसल्स जो है इनकी अंदर एक ब्रॉड ल्यूमेन होती है, इनका थिक वॉल होता है, इनका वॉल हाईली लिग्निफाइड होता है. हर किसी वेसल एलिमेंट का जो एंड रीजन होता है उसमें पोर्स होते हैं. ये एक वेसल एलिमेंट है, इसके ऊपर दूसरा वेसल एलिमेंट, उसके ऊपर तीसरा वेसल एलिमेंट. इस तरह ये सारे वेसल एलिमेंट्स जब एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं, वी गेट व्हाट इज कॉल्ड ए वेसल. वी गेट ए लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम वेसल्स बोलते हैं. दो वेसल्स आर द मेन वाटर कंडक्टिंग cells of the xylem. Remember, vessels are the main water conducting systems of the what is called as xylem. And second is we are having tracheids. Shabash.
these are long and elongated cells, elongated dead cells, shabash, having tapering ends, and thick lignified wall. See, this is a long shabash elongated cell. This is an elongated cell. This is a long cell, elongated cell. And remember, this is having tapering ends. Its wall is thick due to presence of lignin. Now this cell is called as tracheid. Shabash, the inner wall has cellulose. Inner wall of tracheids, the inner wall of tracheids जो है have cellulose thickenings of different shapes. Long, मैंने आपको बोला है tracheids जो है, they are long and elongated cells. Vessels are also long and elongated cells. लेकिन vessels का मैंने यूज किया, they are cylindrical cells, they are having lot of lumen. उसके बरक्स में जो ट्रैकीड्स है, इनके अंदर उतनी ज्यादा ल्यूमिन नहीं होती है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ट्रैकीड्स जो है, ट्रैकीड्स में परफोरेशंस नहीं होते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, जो ट्रैकीड्स के जो एंड्स होते हैं, दे आर थिन. द एंड वॉल्स ऑफ ट्रैकीड्स आर नैरो, while as the tracheids at the center they are comparatively broad, while as they are narrow at their ends पे ये जो नैरो होते हैं. शाबाश. तो ये दोनों जो है, वह ट्रैकीड्स जो है, ट्रैकीड्स form the xylem of pteridophytes and gymnosperms. अभी मैंने आपको बताया जिम्नोस्पर्म्स के अंदर वेसल्स नहीं होते हैं. फिर उनके जाइलम के अंदर ट्रैकीड्स होते हैं. वो ट्रैकीड्स जो है मेनली वाटर कंडक्शन का काम करते हैं. इसी तरह टेरिडोफाइट्स में भी हमारे पास वेसल्स नहीं होते हैं. वहां पे ट्रैकीड्स जो है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर. तभी मैंने आपको बताया ट्रैकीड्स जो है, दे फॉर्म द जाइलम ऑफ, दे आर द मेन वाटर कंडक्टिंग सेल्स. They are the xylem of what is called as pteridophytes and gymnosperms. While as in case of angiosperms, remember in case of gymnosperms, we are having the tracheids, while as vessels are absent. In case of angiosperms, xylem. In case of angiosperms, tracheids and vessels are the main water conducting shabash cells of xylem in angiosperms. Remember this point. This is very important point. So remember, tracheids and vessels are the main water conducting cells in case of angiosperms. And now we are having third cell, that is called as xylem parenchyma. We are having xylem parenchyma. Remember, our parenchymatous cells, they are thin walled cells, they are living cells. Shabash. So these are living and thin walled cells of xylem, shabash, whose function is to store what they store? Food materials. They store food materials in the form of what is called as starch. Store fats,
they store other substances. For example, they store tannins. So remember, xylem parenchyma, these are living and thin-walled cells of xylem, whose primary function is to store food materials of different types, of diverse types. For example, the main food material that is being stored by these parenchymatous cells is starch, followed by fats. In addition to this starch and fat, they also store some other substances, some secondary metabolites. For example, they store what is called as tannins. They store tannins. These are some secondary metabolites. And additionally, shabash, the ray parenchymatous cells. Where parenchymatous cells in case of xylem, they are called as ray parenchyma. Ray parenchymatous cells, or they are also called as medullary rays. Medullary rays are actually parenchymatous, xylem parenchyma. They are also called as ray parenchymatous cells or medullary rays or ray parenchymatous cells. Help in radial conduction of water and minerals. मैं इस तरह आपको समझाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पाइप. दिस पाइप carries out upward, conduction of water. Sometimes there are certain cells of xylem parenchymatous cells. Those xylem parenchymatous cells, they shift this water towards lateral sides. This is lateral conduction of water. So when water not moves from roots to shoot, but on the lateral sides of plant organs, this is called as lateral conduction. आप देखिए, इधर की तरफ चला गया, इधर की तरफ चला गया, यानी टिश्यूज में, डिफरेंट टिश्यूज अपन ऑर्गन में चला गया. ये काम करते हैं जाइलम फाइबर्स. मैंने आपको बताया जाइलम पेरेंकाइमेटस सेल्स का काम है वाटर स्टोर, ये फूड स्टोर करते हैं, स्टार्च, फैट और टैनिन स्टोर करते हैं. इसके अलावा हमारे पास खास कुछ जाइलम पेरेंकाइमेटस सेल्स है जिनको हम रे पेरेंकाइमेटस सेल्स बोलते हैं या जिनको हम मेडुलरी रेज बोलते हैं. ये मेडुलरी रेज जो है ये एक्चुअली क्या करते हैं, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, सिस्टम का ट्रांसफर सेक्शन करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ये जाइलम है, यहां से कुछ रेज इस तरह निकलते हैं, तो यहां ये लेटरली वाटर कंडक्ट करते हैं. दिस इज कॉल्ड एज रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर. सो दीज रे पेरेंकाइमेटस सेल्स और मेडुलरी रेज हेल्प इन रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. एंड द थर्ड वन इज fourth and last cell of xylem is that is called as xylem fibers. Xylem fibers are also called as xylary fibers. These are parenchymatous fibers. You know that parenchymatous fibers, they are long and thick walled cells with obliterated lumen, narrow lumen. Shabash, these are thick walled, इनका थिक वॉल्ड होते हैं. these are thick walled dead cells with thick walled elongated dead cells with shabash tapering ends. Shabash, they help in shabash, they provide mechanical strength to the xylem. मैंने आपको लास्ट में बताया, जो स्क्लेरेंकाइमा है, चाहे वो स्क्लेरीड्स हो चाहे वो फाइबर्स हो, उनका काम होता है दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स वेयर एवर दे आर प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल, वी आर हैविंग xylem fibers. These xylem fibers, they are also called as xylary fibers. These are thick walled elongated dead cells with tapering ends. आप देखिए, ये सेल जो है इसका वॉल थिक है, बड़ी लंबी है, टैपरिंग एंड है. शाबाश, काम इसका क्या है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द xylem. ये सारे xylem को एक रिजिडिटी, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. शाबाश, the lumen of xylem fibers
is obliterated. Remember the word, आपके टेक्स्ट पे लिखा होता है xylem fibers have obliterated. Lumen means their wall is very very thick, and as a result of that thick wall, the lumen, the cytoplasm, the lumen of these xylem fibers, it becomes very 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 narrow. So narrow lumen is called as obliterated lumen. And remember, these xylem fibers, they provide mechanical strength to the plant parts. Again, the xylem is of two types. Now if we see the types of xylem, xylem has two types. One is called as primary protoxylem, another is metaxylem. Shabash. The first formed xylem, this is known as protoxylem. And remember, the lately formed xylem, this is known as metaxylem. So there are two types of xylem depending upon when they are made, when they are formed. The first formed xylem is called as protoxylem. The second lately formed xylem is called as metaxylem. Now these primary xylem, protoxylem and metaxylem, they show different arrangements. For example, in case of protoxylem and metaxylem, they show different arrangements. For example, one arrangement is called as end arc condition. Second is called as X arch condition. One is end arc condition, another is X arch condition. End arc condition is seen in stem, while as X arc condition is seen in root. What actually is this? If you are having a stem, this is transverse section of a stem, और बाहर की तरफ आपको क्या होगा? बाहर की तरफ आपको मेटाजाइलम होगा. मेटाजाइलम, this is metaxylem towards outer side, protoxylem towards inner side, The arrangement of xylem, where protoxylem is present towards inner side, metaxylem towards outer side, this arrangement is X arch, known as end arch arrangement. And remember, this end arch arrangement of xylem is present in case of stem. The stem is end arch, means that the stem has protoxylem and metaxylem. Protoxylem is first formed xylem, while as metaxylem is lately formed xylem. If protoxylem is towards center, while as metaxylem is towards periphery, this arrangement of xylem is called as end arch arrangement or end arch condition of xylem. This has been reported in शाबाश, what is called as stem. मैंने आपको बोला मेटाजाइलम बाहर की तरफ, प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ. इस जाइलम के इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एंड आर्क अरेंजमेंट. इस सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा. इसके बरक्स ये हमारे पास सिस्टम है. अंदर क्या होगा? मेटाजाइलम टुवर्ड्स इनर साइड, प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स आउटर साइड. दिस इज कॉल्ड एज एक्स आर्क कंडीशन. So when protoxylem is present towards the outer side or towards the periphery, while as metaxylem is present towards the inner side, this arrangement of xylem is called as, this condition of xylem is called as XRH condition. And remember, XRH condition of xylem has been reported in roots of plants, roots of angiospermic plants. So we are having two types of xylem. One is called as metaxylem, another is called as protoxylem. The firstly formed xylem is called as protoxylem. The lately formed xylem is called as metaxylem. Metaxylem, the relative arrangement of protoxylem, on the basis of relative arrangement of protoxylem and metaxylem, we are having two types of two conditions. There are two types of arrangements. One is end arch condition or arrangement. Second is X arc arrangement or condition. End arc xylem is the type of xylem where protoxylem is towards the center and metaxylem towards periphery.
X arch is reverse of this. In case of X arch, we are having metaxylem towards center, whereas protoxylem towards periphery. So this was about, what is called as, the xylem. Now we are having second type of what is called as complex permanent tissue, that is called as phloem. Remember, the phloem is a complex permanent tissue. Phloem एक complex permanent tissue है, and इसका काम क्या है? Its function is to carry out the conduction of food materials from the source to the sink. From the source to the sink. Here is the arrangement of this. Again, here is a cell. Then we are having arrangement like this. This is phloem parenchyma. This is companion cell. This is sieve tube. Again, these are pores here. These are pores here. These are the end pores of, these are sieve palates. Shabash. So phloem, it is a complex permanent tissue, responsible for translocation of food materials from source to sink. What does it mean by from source to sink? फ्लोएम का काम है, ये कंडक्ट करता है, एक ये कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स करता है, ये फूड को कैरी करता है कहां से कहां तक, जिस जगह पे ये फूड बनते हैं. फॉर एग्जांपल, लीव्स आर द मेन साइट्स वेयर दिस फूड इज प्रोड्यूस्ड. सो जब ये लीव्स ये गुजा बनाएंगे, फूड बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, it has to be sent to other parts of the plant body where this food is required, where the photosynthesis does not take place, but cells they perform some different other different functions. तो leaves ने ये गजा बनाया. All those regions which carry out the senses of food material in plant biology, in plants, all those regions are called as source. All those regions in the plant body which are not which does not carry out the process of photosynthesis, but they require food material. They require a constant supply of food material. They are called as sink. So source is where food is material is synthesized, food material is synthesized. Sink is the region where food material is consumed. So remember, the phloem, it's a complex permanent tissue, and its function is it is responsible for translocation of food materials. It carries out translocation of food materials right from source up to the sink. The source is the region on plant body where this food material is produced. जब ये गजा बनता है, इसको दूसरी जगह तक लेना है, ये इसको दूसरा जगह जहां इसको लेना है, इसे सिंक बोलेंगे. इन्हें सोर्स से सिंक का गजा को जाना है, ये जाएगा थ्रू ए पाइपलाइन. दैट पाइपलाइन इज कॉल्ड एज फ्लोएम. एंड रिमेंबर, दिस फ्लोएम जो है, इट इज मेड अप ऑफ 4 different types of cells. In case of phloem, you know what we are having: sieve tubes, then we are having companion cells, then we are having phloem parenchyma, then we are having phloem fibers. So this is made up of 4 different types of cells. Similar to that of the xylem, we are having 4 types of cells also there. And remember, if we take the case of a gymnosperms, in gymnosperms we do not have sieve tubes,
but we are having sieve cells. Sieve cells, and we do not have companion cells. We are having albuminous cells. Remember, in case of gymnosperms, the sieve tubes and companion cells are not present. So what is different? They are absent. Sieve tubes and companion cells are absent in case of gymnosperms. Instead of sieve tubes and companion cells, we do have sieve cells and albuminous cells. Sieve cell is analog; it's equivalent to sieve tube, and albuminous is present instead of companion cell. So what is difference between a sieve tube and a sieve cell? We are having sieve cells. They are long, elongated cells with perforated ends. These perforated ends of sieve cells, they are called as sieve palates. Remember, this is a sieve cell. This is a sieve cell. This is sieve cell. SC. This is sieve cell. This sieve cell has perforated palate ends known as sieve palates. This has perforated ends known as sieve palates. This is sieve palate. This is also sieve palate. हर किसी sieve cell का दो sieve palates होते हैं, दो एंड्स होते हैं, दोनों एंड्स के ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं. सो रिमेंबर, एवरी sieve cell has sieve palates, have pores, have perforation pores at the ends. Those perforated ends of sieve cells, they are called as sieve palates. So जिस तरह हमारे पास वेसल एलिमेंट्स के एंड्स के ऊपर पोर्स थे, हमने वहां पे बोला दे आर कॉल्ड एज परफोरेशन पोर्स, वाइल एज इन केस ऑफ फ्लोएम हर किसी sieve सेल के जो एंड्स होते हैं उसके ऊपर भी पोर्स होते हैं, बट दोज पोर्स दे फॉर्म पलेट्स. Those palates are called as sieve palates. So this is one sieve cell. This sieve cell, what happens? This sieve cell joins with another, carries out end-to-end joining. It carries out end-to-end joining with another cell, sieve cell. So shabash, this is one sieve cell, this is another sieve cell, this is another sieve cell, this is another sieve cell. So sieve tube is a long tube-like structure formed by end-to-end joining of sieve cells. Remember, sieve tube जिस तरह एक vessel एक long tube-like structure है जो बनता है by the end-to-end joining of vessel elements या vessel members. इसी तरह sieve tube जो है they are long tube-like structures formed by end-to-end joining of what is called as sieve cells. So शाबाश, हमारे पास gymnosperms के अंदर sieve tubes नहीं है, हमारे पास sieve cells है. उसका मतलब हो गया gymnosperms के अंदर जो sieve cells है they do not carry out end-to-end joining, rather they remain as individual cells. They do not carry out end-to-end joining. Anatomy में हम एक word use करते हैं, that word is called as anastomosis. Anastomosis means end-to-end joining. So in case of gymnosperms, the phloem, the sieve cells do not carry out anastomosis, and thus they remain sieve cells, while as in case of angiosperms, the sieve cells carry out anastomosis, means they carry out end-to-end joining, and hence sieve tubes are formed. So sieve tubes, in case of gymnosperms, we do not have sieve tubes, but we are having sieve cells. In case of gymnosperms, we do not have companion cells, but we are having albuminous cells. So remember this very point, that in case of gymnosperms we do not have sieve tubes, but we are having sieve cells. We do not have companion cells, but we are having what is called as albuminous cells. शाबाश. जहां तक sieve tubes का ताल्लुक है, these are long tube-like structures, tube-like structures formed by end-to-end means anastomosis, end-to-end joining of sieve cells, formed by anastomosis means end-to-end joining of sieve cells. Shabash. The common wall, the ends of sieve cells, have pores, shabash, and they form
they form sieve pellets. They form the sieve pellets. And remember, at maturity, and remember, each sieve cell has प्रोटोप्लास्ट. हर किसी सीव सेल का प्रोटोप्लास्ट होता है या प्रोटोप्लाज्म होता है या साइटोप्लाज्म होता है. इट हैज अ लार्ज वैक्यूल. हर किसी सीव सेल का एक लार्ज वैक्यूल होता है. बट रिमेंबर, न्यूक्लियस इज एब्सेंट. हर किसी सीव ट्यूब के अंदर, हर किसी सीव सेल के अंदर आपको थोड़ा बहुत पेरिफेरल प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म मिलेगा. इस तरह हम लिखेंगे साइटोप्लाज्म, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है. पेरिफेरल फॉर एग्जांपल ये हमारे पास, या मैं इस तरह यहां पे एक सेल बनाता हूं. ये मेरे पास सेल है, ये मेरे पास सीव सेल है. आप देखिए यहां पे मेरे पास पेरिफेरी पे साइटोप्लाज्म है, पेरिफेरी पे साइटोप्लाज्म है. शाबाश, एक बड़ा सा वैक्यूल है, लार्ज वैक्यूल, बट न्यूक्लियस इज एब्सेंट. रिमेंबर, द सीव सेल्स और सीव ट्यूब एलिमेंट्स, they are enucleated. They are without a nucleus. And remember, what controls the functioning of these sieve cells is the companion cell, because each sieve tube element, each sieve cell is associated with a companion cell. हर किसी सीव सेल के साथ एक कंपेनियन सेल होती है. हमारे पास सीव सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी है, वैक्यूल भी है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं है. न्यूक्लियस जो है सेल का कंट्रोल हाउस होते हैं. इस तरह जो सीव सेल्स को कंट्रोल करते हैं कंपेनियन सेल. रिमेंबर, द एक्टिविटी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ सीव सेल्स, the functioning of sieve cells is controlled by the functioning of sieve cells is controlled by what is called as companion cells. Is controlled by companion cells. So companion cells control the functioning of sieve cells. शाबाश. सेकंड जो दूसरी सेल है, that is companion cell. Companion cells. ये कंपेनियन सेल्स असल में पेरेन्काइमल सेल्स है. दीज आर स्पेशलाइज्ड, कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स that always remain associated with the sieve cells. They always remain associated with the sieve cells. So remember, companion cells are special parenchymatous cells, and remember these companion cells, they are specialized parenchymatous cells. They always remain associated with shabash, sieve cells through pits present in their common wall. मैं आपको समझाता हूं. in their common wall. For example, ये जो है this is sieve cell. ये जो है ये companion cell है. आप देखिए यहां पे pores है. These are pores. यहां पे pore है, यहां पे pore है, यहां पे pore है. So this is common wall between the sieve cell and the companion cell. The common wall of the sieve cell and the companion cell has pores. Those pores are called as pits. So remember, each companion cell always remain associated with the sieve cell through the pores. Those pores are in anatomy are called as pits. Through the pits that are present in their common wall. The wall that is between a sieve cell and a companion cell, it's a common wall. It has pores. Those pores are called as sieve pores. Those pores are called as pits. Those pores are called as pits. And through these pits, the companion cell exert a regulatory control over the sieve cells
ये सीयू सेल्स के ऊपर एक रेगुलेटरी कंट्रोल एक्सर्ट करते हैं। एंड रिमेंबर सीयू companion cells control the turgor pressure up या pressure gradient, control the pressure gradient of what is called as CU cells. CU cells का pressure gradient जो है that is being controlled by the companion cells. Remember, the companion cells control the what is called as pressure gradient of the CU cells. So remember, these companion cells, they are living cells, they are always associated with a CU cell. So कहने में आया है, if a CU cell dies, if a companion cell dies, a CU cell also dies. If a CU cell dies, companion cell also dies. So it means that they are closely associated with one another. Now we are having third cell of xylem. Those they are called as what is called as phloem parenchyma. They are called as phloem parenchyma. Third cell we are having phloem parenchyma, and remember, these are elongated parenchymatous cells. These are elongated parenchymatous cells. Cells that store क्या करते हैं? फूड स्टोर करते हैं, फैट स्टोर करते हैं, रेजिन्स स्टोर करते हैं, म्यूसिलेज स्टोर करते हैं, एटसेट्रा। तो मेन काम फ्लोएम पैरेन्काइमा का है। ये असल में लिविंग सेल्स है, पैरेन्काइमेटस सेल्स है, लेकिन फ्लोएम के अंदर ये थोड़े बहुत एलोंगेटेड लंबे सेल्स है। तभी मैंने बोला दीज आर एलोंगेटेड पैरेन्काइमेटस सेल्स। जहां पे वर्ड पैरेन्काइमा आएगा, आपके जहन में खुद ये बात आनी चाहिए कि ये सेल जो है ये लिविंग है, इसका थिन वॉल है, शाबाश ये लिविंग सेल है। तो फ्लोएम पैरेन्काइमेटस सेल्स, दीज आर elongated parenchymatous cells that store, इनका काम मेनली है to store food, fats and other substances like resins, what is called as mucilage, gum, etc. ये store करते हैं। And remember, phloem fibers, parenchymatous cells, PP, phloem parenchyma, remember, phloem parenchyma, PP, phloem parenchyma is generally absent in monocotyledons, in the phloem of monocotyledons. This is very important point. Phloem of monocotyledons. जो मोनोकॉट्स का फ्लोएम है, वहां पे जो है हमारे पास फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है ये एब्सेंट होते हैं। इसका मतलब प्रेजेंस ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डाइकॉट फ्लोएम, while as phloem parenchyma is absent in case of monocotyledons. ये monocotyledons में absent है, पाया नहीं जाता है। इसके बाद हमारे पास जो है फोर्थ टाइप ऑफ सेल ऑफ फ्लोएम इज दैट इज कॉल्ड एज, जो हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ सेल है दैट इज फ्लोएम फाइबर्स। मैं आपको एक और पॉइंट बताऊंगा, जाइलम फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज वुड फाइबर्स। याद रखना, जाइलम फाइबर्स का एक और नाम है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज वुड फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड एज वुड फाइबर्स, क्योंकि जाइलम का दूसरा नाम वुड है। फ्लोएम फाइबर्स जो है दे आर आल्सो कॉल्ड एज बास्ट फाइबर्स। इनको हम बास्ट फाइबर्स बोलते हैं क्योंकि इसका दूसरा नाम बास्ट है, फ्लोएम का दूसरा नाम बास्ट है। सो फ्लोएम फाइबर्स दे आर आल्सो कॉल्ड एज बास्ट फाइबर्स। These are elongated, shabash, dead cells with thick walls and narrow lumen. यही तो पैरेन्काइमा की खासियत है। नैरो ल्यूमेन होता है, वॉल थिक होता है, एलोंगेटेड होता है।
शाबाश, these have tapering ends, इनके tapering ends होते हैं, these have tapering ends, शाबाश. And most important point is that phloem fibers are generally absent in primary phloem. प्राइमरी फ्लोएम, जो पहले फ्लोएम बनता है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी फ्लोएम. फिर हमारे पास प्लांट्स में एक प्राइमरी ग्रोथ होती है, प्राइमरी ग्रोथ के अंदर जो फ्लोएम बनता है दैट इज प्राइमरी फ्लोएम. फिर हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ होती है, प्लांट्स का जो डायमीटर या थिकनेस जो है वो बढ़ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ में फ्लोएम बनेगा, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी फ्लोएम. शाबाश. फ्लोएम फाइबर जो है असल में प्राइमरी फ्लोएम के अंदर नहीं मिलेगा. उस प्लांट के अंदर जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें सेकेंडरी फ्लोएम बनता है. उस सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर आपको जनरली जो है फ्लोएम फाइबर्स मिलेंगे. सो फ्लोएम फाइबर्स आर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम. शाबाश. बट प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम. सेकेंडरी फ्लोएम formed आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ. कब बनता है? सेकेंडरी ग्रोथ के बाद. और अगेन फ्लोएम फाइबर्स का काम यही है दैट दे कैरी आउट, दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द फ्लोएम. फ्लोएम फाइबर जो है स्ट्रेंथ कैमेट्स फाइबर्स है और ये फ्लोएम फाइबर्स की कमर्शियल इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हेम्प है, फ्लेक्स है, या जूट के जो ये प्लांट्स है, एक हेम्प है, एक जूट है, एक हमारे पास जो है फ्लेक्स है. इन प्लांट्स का जो फ्लोएम फाइबर्स है दे आर कमर्शियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर एबल टू get long fibers from them, and those long fibers are used to make a lot of materials, a lot of things that are economically important. So these phloem fibers have a lot of economic importance, commercial importance, for especially the phloem fibers of flax, the phloem fibers of hemp, the phloem fibers of what is called as jute. इनके जो फाइबर्स है वो कमर्शियली इंपॉर्टेंट होते हैं. हमारे पास फ्लोएम के भी दो टाइप्स होते हैं. जिस तरह जाइलम के हमारे पास दो टाइप्स है, एक मैंने बोला प्रोटोजाइलम, दूसरा मैंने बोला आपको मेटाजाइलम. एक इसी तरह हमारे पास फ्लोएम के भी दो टाइप्स है, एक हमारे पास है प्रोटोफ्लोएम, दूसरा है मेटाफ्लोएम. प्रोटोफ्लोएम के अंदर एक हमारे पास है प्रोटोफ्लोएम, एक हमारे पास है मेटाफ्लोएम. ये दोनों है टाइप्स किसके? फ्लोएम के. फ्लोएम हमारे पास दो तरह के हैं. प्रोटोफ्लोएम, द टाइप ऑफ फ्लोएम हैविंग नैरो सीव ट्यूब्स. शाबाश. द टाइप ऑफ फ्लोएम हैविंग ब्रॉड सीव ट्यूब्स. फर्स्ट फॉर्मड phloem is called as protoploem. Lately formed phloem is called as metaploem. How can you differentiate between the two? In case of protoploem, the sieve tubes are having narrow lumen, while as in case of metaploem, the sieve tubes are having broad lumen. So remember, phloem again is of two types. One is we are having the protoploem, the first formed phloem, and the secondary formed phloem. The first formed phloem is called as protoploem. The lately formed phloem is called as metaploem. How can you differentiate between protoploem and metaploem? In case of protoploem, you are having sieve tubes, but those sieve tubes are having narrow lumen. In case of metaploem, you are having sieve tubes, but those sieve tubes are having broad lumen. So remember this. In the next video lecture, we will discuss about various tissue systems in plants. Thank you.